नमस्कार, मैं अशोक व्यास विजन वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आईटीवी गोल्ड पर आज सोमवार को इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं कुछ झलकियां उस संबोधन की जो न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू कुमो ने यूएसएस इंट्रेपिड सी एयर एंड स्पेस म्यूजियम में दिया। उसके अलावा एक खास मुलाकात का अंश कांग्रेसमैन टॉम स्वाजी के साथ, जिसमें उन्होंने कोविड-19 संबंधी स्थिति के बारे में चर्चा की, और इस बातचीत में हमारा साथ दिया जेवियर स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रेसिडेंट रवि भोपलापुर ने। आज के कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने वाले हैं फ्रैंक स्करलॉक से भी, जो एंटरप्रेन्योर हैं और साथ ही इन्वेंटर भी हैं और प्रोबेबली प्रेसिडेंशियल होपफुल भी। आज के कार्यक्रम में समाज की सेवा करने की करुणा से प्रेरित एक रेस्टोरेंटर अमित गुहा से बातचीत का अंश, जो कि हेल्थ वर्कर्स के लिए क्या कर रहे हैं ये आप जानेंगे आज के विजन ऑफ एशिया कार्यक्रम में। बने रहे हमारे साथ। होते हैं हाजिर इस छोटे से ब्रेक के बाद। फिर एक बार स्वागत है आपका विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम सोमवार से गुरुवार तक आपकी सेवा में आईटीवी गोल्ड पर शाम 8 बजे पेश किया जाता है, और रविवार को एक साप्ताहिक अंक विजन ऑफ एशिया का पेश करते हैं सुबह 11 बजे। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा उत्साह बढ़ाती हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करने के साथ साथ गुजारिश है कि बने रहे हमारे साथ। होते हैं हाजिर इस छोटे से ब्रेक के बाद। विजन ऑफ एशिया और वॉइस ऑफ कम्युनिटी में आज की शुरुआत करते हैं न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू कुमो द्वारा यूएसएस इंट्रेपिड सी एयर एंड स्पेस म्यूजियम में दिए गए संबोधन से, जहां उन्होंने सर्विस मेंबर्स को ऑनर करने के साथ साथ कोविड-19 से जूझते हुए न्यूयॉर्क की ताज़ा स्थिति की जानकारी भी दी। And today we honor the service members who have lost their lives. We remember their families and the pain that they've dealt with. And we thank them all for their service, their bravery, and their sacrifice. I want to thank the Gelband family, Stu and Ellen, for being with us today and giving us the honor. And let's take a moment of silence in memory of all those who are fallen and wishing their families peace on this difficult day. We're still in the midst of this COVID battle. We are making progress here in New York. Again, the hospitalization rate is down. The net change in hospitalizations is down. Intubations is down, which is very good news. Day-to-day hospitalizations are down, which is continued good news, and in many ways the most important news. It means the number of people who are coming in to our hospitals on a day-to-day basis continues to drop. And the most important number to me, the number of lives lost, 96, is still painfully high, but only in the relative absurdity of our situation is that relatively good news. कांग्रेसमैन टॉम स्वाजी संघर्ष करते रहे हैं कि न्यूयॉर्क को उसके लिए आवश्यक फंडिंग फेडरल गवर्नमेंट से मिले। इसके बारे में जानकारी देने के साथ साथ उन्होंने कुछ अन्य बातें भी बताई। उस बातचीत का अंश जिसमें हमारा साथ दे रहे थे जेवियर स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रेसिडेंट रवि भोपलापुर। पेश है बातचीत का ये अंश, जो कल के इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास कार्यक्रम में आप पूरी तरह देख पाएंगे। Everybody's very anxious right now. They're worried about their health, much better today than it was 4 weeks ago. People are mourning people that have passed away. We lost my father-in-law. We buried him 5 weeks ago. He was 92 years old, and he got the coronavirus, and he passed away within 36 hours of his diagnosis. And people are worried about their finances. So many people that have lost their jobs, so many small businesses that haven't reopened. There's a lot of anxiety. So when I go to Washington, I'm always fighting for New York. I want to bring back the fair share of the money to New York. I represent 3 of the 6 hardest hit counties in America. I represent Suffolk, Nassau, and Queens counties, 3 of the 6 hardest hit counties in America. And when money is distributed from the federal government during the coronavirus,
I have fought to ensure that a pot of money would be distributed based upon the rate of infection, not population, not old data, but based upon today's current crisis. And I was succeeded in getting that money put into the HEROES Act that we voted on last Friday. I've also fought to get the SALT deduction, the state and local tax deduction that's so important to the people of Long Island and Queens, New York City, the tri-state region, reinstate the SALT deduction in the HEROES Act as well. For both of those provisions, as well as many others, we now need the Senate to negotiate with us and get a deal done to actually deliver this much needed relief to people in my district and people throughout New York and throughout the country. We are delighted that you are working diligently and intelligently for New Yorkers. And I must also mention that probably you are expecting $40 billion for New York, and I think this is to the tune of $49 billion. So That's that's correct. additional victory. I would have Ravi Buplapurji share his concern from the point of view of business community, and as an attorney as well as a CPA, you know very well what they are facing. Raviji, go ahead. Okay, first of all, Ravi G. thank you, Congressman. It was so nice of you to text me back whenever I called you or asked you something. First, I had to congratulate you. You're the first responder for all the people who are in trouble, taking everybody's call, and you're helping every single small business owners, SBA and everything. With my own experience, I've seen you connected me to Rob of SBA, and things are working out smooth. And I'm in the business community. I know everybody is so proud and happy about your help. And that is, there's no question about, we are very thankful to you. The questions I have are a couple of things, Congressman. This facilitating the funding for the healthcare in case if it reoccurs or something. I hope there is no shortage of any funding to our hospitals in New York. Am I correct? Oh, that's a big issue of mine. When they first handed out the money from the first CARES Act, the first tranche of money, Texas, which had 2.5% of the cases, got more money than the New York hospitals, which had 35% of the cases. So I fought that. I got every Democrat and every Republican in New York to sign a letter to the Health and Human Services. I worked with Chuck Schumer, and we got a $10 billion fund that would be distributed based upon the rate of infection. Of that 10 billion, 4 billion came to New York hospitals. That money alone helped to solve the major crisis we had with the New York hospitals. So I'm very proud of that. I'll always fight for the New York hospitals. That's great. Another question I have is this unemployment benefits issues. It was too much of a backlog from the governor's office. We heard governor every day talking, but honestly speaking, that is not an answer we never got from the governor's office. A lot of still people are getting now, but it did not work. So you have any comment? How do we resolve this other than, listening to the same? In my office, we get hundreds of calls every day about the unemployment insurance issue. And as much as we'd like to blame somebody or point fingers at the failure of the state to do this, this is happening in every state. And the reality is that the computer system that was set up for unemployment insurance in every state throughout the country are simply not powerful enough to handle the volume of cases. The New York State system was designed to handle 50,000 cases a week. It's hundreds of thousands of cases a week, and it's just overwhelmed. I think that we should consider looking at bills to try and keep people off of unemployment altogether, which is what the objective of the PPP program was, but it's not working as well as I would like to see it work. And there's a new proposal out there to actually, similar to what they're doing in Europe, whereby we give the money directly to the companies in return for them keeping people on the employment rolls. So this is being debated now. Right now, they want to extend the unemployment insurance, but we need to look at some of these other ideas as well. फ्रैंक स्कर्लॉक जाने जाते हैं एक एंटरप्रेन्योर और इन्वेंटर के रूप में, और वो प्रेसिडेंशियल होपफुल भी हैं. हाल ही में उनसे जो बातचीत हुई उसका ये अंश पेश है. I don't think politically right now, and even financially, we're out of control.
things are getting pretty expensive. It's tough living. Wages are kind of stagnant. Expenses are out of control. Um, you know, have it be cell phones, utilities, cost of housing, things just are spiraling out of control. What's not out of control is earnings. Earnings are pretty flat. Maybe you can have some speculation in the stock market, which yeah, you can make money, and I've made money there, but that's a false economy. That's based on news comes and goes and stuff like that. I think you got to have something that's consistent that people can bank on. So I think it's time we reset the clock. We teach people to do more with less, which is one of my buzz lines right now. That's do more with less. I mean, if you just take some of the industries out there, like professional sports or concerts, I mean, some of these ticket prices to go see, like the New Orleans Saints where I am, if I want to sit downstairs in our Superdome arena, it's like $250, $300 for a show I might not like. They might get beat up that day, which doesn't make a lot of sense to me. Also, if you go see an entertainer, a performer, the concert tickets are ridiculous. And so I think we need to get back in simple times, slow it down. I'm just a simple guy. I'm a realist. Um, I'm concerned about health because if you don't have health, you don't have anything. So, I'm actually decided myself I'm going to lose some substantial weight while I'm on the campaign trail, which is be healthy. This morning, a friend of mine and I, we challenged each other and we each did a mile. We did 1 hour on a treadmill. I hadn't done an hour on a treadmill in over a year. So we did it today. I travel extensively, and the gym at my hotel was open, so we decided to use it. I see a much bigger picture that I see people coming together, and instead of trying to take advantage of people, I pray for a situation that people want to work together for the common good. And I have a saying, goodness will prevail if you let it. Because a lot of times people don't let it. They go in for the kill and they hurt somebody. It's like a sales car. You go to buy a car, there's a salesman, he gets excited, going to get a commission. Well, you know what? I would only sell something to somebody if they were comfortable with it. And that's the whole deal, is you have to be also relaxed. So I lost my mother to pancreatic cancer, and I'm pretty certain it was caused by stress. My father was pretty laid back. His blood pressure was actually super low, to tell you the truth. Take care. Thank you. His blood pressure was low because I remember working on a few special projects with him, and he actually was concerned for his health, not because of high blood pressure, it was because of low blood pressure, because he had so much confidence and feeling in himself. But what I would like to share is we believe we're really onto something significant with the corona, is that using all natural holistic ways, from lighting to oxygen to stimulation of the cells of the body, that we can cure the coronavirus pandemic naturally. रेस्टोरेंटर अमित गुहा ने कोविड 19 की स्थिति के चलते जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं उनका सामना करने के लिए अपनी ओर से सेवामय सहयोग देने का निर्णय लिया और हेल्थ वर्कर्स तक हर दिन पिज़्ज़ा पहुंचाने के क्रम में कोऑर्डिनेशन के लिए उनकी मदद की वैलेरी सेन गुप्ता ने। ये क्रम जारी है। पेश है उनसे बातचीत का ये अंश। I think initially it was just word of mouth, whoever we knew in the community. But from a marketing perspective, basically what I did is there was a lot of press articles that people were requesting. There was a lot of how do we spread the word of what we're doing to people beyond our community, right? Because it's not just, within our community who we're helping everyone. And so it was making sure, thinking from a marketing perspective, how can we get the word out about
this project that we're doing to help the front line. Yeah, I would like both Valerie and I would like people to go to our website at www.rivierav.com. Look at our site, and if they could contribute in that way, we can continue this crusade in supporting the frontline workers who are really God sent and helping and saving the lives of people. Something goes wrong, we go to them. So why don't we support them without any inhibitions on our part? So please, I would like the viewers and the community members to go to www.rivierav.com and contribute. And whether they come through us and help the front line, or they just take that idea and run with it on their own, our end goal is we want to show our gratitude to the front line, whether that goes through Riviera 5 or it goes through someone else. That wasn't really the point. दीदी माँ ऋतंबरा का नाम न केवल आध्यात्मिक जगत में बल्कि समाज सेवा के साथ साथ राष्ट्र प्रेम के पर्याय के रूप में भी लिया जाता है। कोविड-19 की स्थिति का सामना करते हुए सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ वो ब्रह्म यज्ञ का आयोजन कर रही हैं। इस बारे में जानकारी उन्होंने हमारे साथ स्काइप से बातचीत करते हुए दी। पेश है उस बातचीत का ये अंश। तो व्यास जी, ऐसा था कि लगातार मुझे कहा जा रहा था कि अभी क्योंकि हम पब्लिक में, जनता में जा नहीं सकते, कार्यक्रमों के आयोजन भी नहीं हो सकते, तो मैं यद्यपि कभी भी ऐसे लाइव कभी फेसबुक वगैरह पे नहीं रही हूँ। ऐसे कुछ कुछ संदेश मेरे जाते रहते हैं, मेरा सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं हूँ, बड़ी बैकवर्ड हूँ इस मामले में मैं। तो हुआ ये कि कुछ ना कुछ होना चाहिए। मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना सब लोग ब्रह्म यज्ञ के लिए, मेरे मन में बहुत वर्षों से ये ख्याल आता है व्यास जी, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ा दंश है जो मैं महसूस करती हूँ कि हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था को लेके उसका दुरुपयोग किया गया जिस तरह, और जातीय विद्वेष जिस तरह राजनीति की चाशनी चढ़ के इस देश की अंतरात्मा को विखंडित करता रहा, वो मेरे चित्त चेतना का बहुत बड़ा चिंतन का विषय रहा। क्योंकि बहुत सारा ऐसा समाज है जो दिग्भ्रमित होकर इधर उधर भटक रहा है, और आप देखो कि धर्म की दुकानें चलाने वाले लोग वो भी जनता को भेड़ बकरियां समझकर, मतलब हिंदू जाति एक बड़ी फसल है जिसको जो चाहे वो काट ले। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है हमें किसी चीज का अधिकार नहीं है, हमें होम करने का अधिकार नहीं है, हमें यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं है। तो मेरे मन में कई बार ये आता रहा कि भाई क्यों ना आप पूरे ब्रह्मांड को कुंड समझें और अपने सदकर्मों की आहुति दें, जिससे सारी सृष्टि का कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। तो बहुत वर्षों से मेरे हृदय में एक ये भावना रही। आप देखो कि हमारे देश में बाहर से तो खतरे बहुत हैं, पर हमारे अंतर कलह भी बहुत हैं। हमारी बातों को लेके बड़ी स्पष्टता नहीं है, चाहे वो कर्म कांड को लेके हो, अन्य हमारी और धार्मिक गतिविधियां, या हमारे धर्म की विधा कैसे हमारी जिंदगी में धर्म क्रांति करता है। तो ये चंद लोगों तक ही सीमित हुआ, बाकी सारे लोग कोसों दूर चले गए और वो भ्रमित किए गए। और जब हिंदू भ्रमित होता है, उसकी ताकत कम होती है, तो देश अंदर से टूटने लग जाता है और शत्रु जो है वो प्रबल हो जाता है। तो मेरे मन में बहुत वर्षों से एक भावना थी कि क्यों ना सर्व समाज, सारा समाज ये देखे बिना कि वो किस जाति में पैदा हुआ, उसका अपना क्या पहचान है, वो ब्रह्म यज्ञ करे। तो कोई साकल्य नहीं, कोई सामग्री नहीं, कोई कुंड नहीं, ब्रह्मांड को कुंड मानना है। और क्योंकि हृदय स्थल पर अंगुष्ठ मात्र परम पुरुष विराजमान है, हमारा विज्ञानमय कोश हृदय में है, इसीलिए वहां हृदय पे हाथ रखना है और दूसरे हाथ को योग मुद्रा में। और अभी आप देखो कि ये पौर है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार इस मंत्र का ओम स्वम सर्व मंगलाय स्वाहा करके 13 बार मंत्र का जाप करके ब्रह्म यज्ञ। ये भगवती सर्वमंगला जो है वो त्रिपुर सुंदरी की 14वीं नित्या विद्या है।
जिसके बीज मंत्र से हम ब्रह्म यज्ञ करवाते हैं। तो उसके पीछे मेरी यही धारणा थी कि धीरे धीरे पूरा समाज 13 बार मंत्र जाप करके ब्रह्म यज्ञ की अगर परंपरा हमारे यहाँ प्रारंभ होती है तो जातियों की दीवारें गिरेंगी। तो हम लोग वाल्मीकियों के और रविदासियों के कॉलोनी में, और देखो व्यास जी, मैं अगर कथा करने कहीं जाती हूँ तो फिर ये होता है कि जिस दिन शबरी का प्रसंग होगा उस दिन सब शबर जाति के ही लोग भोजन पकाएंगे और वो प्रसाद बांटेंगे, और जिस दिन वाल्मीकि जी का प्रसंग होगा तो वाल्मीकि जाति के ही सब लोग भोजन पकाएंगे और वही प्रसादी वितरित होगी। और जिस दिन केवट प्रसंग होगा उस दिन सैकड़ों की संख्या में केवट जाति के ही लोग जजमान बनेंगे और मंचों पे आके विराजमान होंगे। तो एक कथा अपने आप में एक बड़ी क्रांति हो जाती है। जो सामाजिक दूरियां हैं वो नजदीकियां बहुत जरूरी हैं, हम पास में आके बैठे, ये बहुत जरूरी है। तो ये क्योंकि चिंतन के केंद्र बिंदु में एक आत्मता रही, तो उसमें से ही ये ब्रह्म यज्ञ की कल्पना कि हम इस तरह ब्रह्म यज्ञ करें। तो फिर हमने सोचा कि चलो एक दिन ब्रह्म यज्ञ करवाएं। जिस दिन करवाया उस दिन लगा क्यों ना 21 दिन किया जाए। तो फिर हम 15-20 मिनट अपना कुछ पाथे दे देते हैं और फिर ये ब्रह्म यज्ञ, मंगल कामना, विश्व की कामना, विश्व के कल्याण की कामना, प्राणियों के सद्भावों की कामना। तो वैसे भी जब हम दूसरे के सुख की कामना से भरते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा हृदय भी तो रस से भर जाता है। ये बहुत सुंदर विधा है, सुखी करने का प्रयत्न हमें सुख दे देता है। उसी भावना से ये कोई बहुत बड़ा कोई कर्मकांड रहस्यात्मक कोई विषय नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड को कुंड मान के अपने सदकर्मों की आहुतियां डालने की भावना ब्रह्म यज्ञ की है। वैसे हमारे यहाँ ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ऐसे 5 यज्ञ माने गए हैं। और जो ब्रह्म यज्ञ है ये संध्या वंदन और स्वाध्याय, आचार्यों का आदर सम्मान, उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। और आज का विजन एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि ITV गोल्ड का एक बहुत सक्रिय फेसबुक पेज है, आप उसका फ्रेंड बने और हमारे कार्यक्रमों का समयानुसार लाभ उठाएं। साथ ही ITV गोल्ड के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इवेंट्स के बारे में तथा अन्य जानकारियों के साथ हमें लिखें events@itvgold.com पर। हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद करने के साथ साथ ये प्रार्थना कि हम सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और उन सभी हिदायतों का पालन करें जो हमारे सामूहिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, जिसमें से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ साथ हाथ न मिलाकर करना है। नमस्कार, अनुमति दें। नमस्कार।